गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी को हम वेलकम करते हैं हमारे ओपन डिस्कशन चैनल में। आज का हमारा फिर से हम डॉक्टर इंद्र सेन राव एडवोकेट ये फिर से हम वेलकम करते हैं हमारे इस शो में। और हम आज फिर से क्वेश्चन करेंगे हमारे सर से कि जस्टिस के बारे में। आपका वेलकम है सर। Thank you, Mr. Mustafa. Thank you for inviting me. सर इस जी सर बोलिए। जस्टिस हम हमारे कंट्री में जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड बोल के एक प्रवर्ब है सर। हमारे पास हम जब जुडिशरी में हमारे देखते हैं तो हर तरीके से जस्टिस को जो सुना डिस्करेज किया जाता है, जजमेंट्स को डिस्करेज किया जाता है। चाहे वो इनके इन टर्म्स ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस रहो, इन टर्म्स ऑफ एक्विटल रेशियो रहो, इन टर्म्स ऑफ जो है सोना अफोर्डेबिलिटी रहो। हर तरीके से डिस्करेज और डिनाई किया जाता है जस्टिस को हमारे नॉर्मल सिटीजन, इनफैक्ट मिडिल क्लास को भी डिनाई किया जाता है। तो इसका आप क्या क्या टेक है सर, और इसको किस तरीके से हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकेंगे? Thank you, Mustafa ji. In fact, what you said is justice delayed is justice denied. वो तो बहुत सही कोटेशन था, लेकिन और एक कोटेशन भी है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। इसका मतलब जल्दीबाजी करें तो जस्टिस को हम खुद उसको बरी करेंगे। सो दैट इज आल्सो देयर। Here, coming back to our country and our cases, there are crores of pending cases and lakhs of pending cases in High Court and Supreme Courts and crores in the overall the country. One of the reason is obviously I don't want it to give any judgment without taking something. And our judicial system itself is having some kind of a built-in errors. Built-in errors का मतलब I'm not criticizing any judiciary system, but system itself is like that. But आजकल तो वो थोड़ा कम हो गया due to the technology. See, you remember when there was a no technology, the railway reservation system used to be very horrible, including corruption and other things. So now, with the technology, transparency develops, and with the transparency, everything at least going to be good, or it is getting good. Similarly, in the judiciary system also, the transparency is important. And the rules and regulations, because any law can be interpreted. We have the levels of the courts, starting from the lowest court to the Supreme Court, and each court's interpretation sometimes varying. And that doesn't mean that lower court judge थोड़ा गलत किया बोल के तो नहीं सोचने का है। उनका अपना knowledge से he has taken some kind of a interpretation and he has given the judgment. इसका ऊपर हाई कोर्ट में और उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, but in the there are missing links will be there. See, with the transparency and with the technological upgradation and in-depth study, we can at least link these missing gaps, and we can have the better judgment. So ultimately, our judiciary system has to now focus on the transparency, technology, and filling the gaps wherever they are. And responsibility. Responsibility is one more important factor in the entire judiciary system. It is the responsibility of the advocates and responsibility of the judges. That is the reason we call it the bar and bench coordination. This bar and bench coordination is very, very important because the litigants, whoever approaches the advocates, whoever approaches the courts, they have their own problems. Somebody may file a fake case, somebody may have a genuine. And for every person, even the person who is stealing somebody's property, he thinks that it is his property. Similarly, who is making a fake case, he thinks that he somehow manages. That is the selfishness. So there are three important aspects. If somebody really finds the fake cases or litigants with no seriousness, particularly in PIL cases, we have seen just like fun, if somebody files a PIL case, there is a lot of penalties are there. So some kind of a situation should be there. Then only the reforms in the judiciary is very much important. With the judiciary reforms, ultimately, we can slowly fill the gaps between the injustice and justice and fill the gaps between the what is correct and what is not correct. And accordingly, we can
create our judiciary system in a better way, transparent way, and expeditious way. So that is my opinion. Continue the very healthy discussions in future also. Thank you very much. आप सभी से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमको मदद करें कि हमारा चैनल ग्रो हो सके। और आपके जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, जो भी आपके केसेस है, आप हमको कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर मेंशन पोस्ट कर सकते हैं। हम उसके आपके रिलेवेंट पोस्ट को हमें आपका केस अगर है तो हम उसको डिस्कस करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आपको जितना हो सके हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।